H1 heading tag. H1 slash H1, H2 slash H2, H3 slash H3, H4 slash H4, H5, H6 and on. Okay, clear. Then nextly we have work out with the execution of the another tag, that is Bold. yes guys, Bold tag, italic tag. bold, italic. Okay, then horizontal row. Then we have work out for including image, creating the tables Yeah. and all. Okay, then we are go for the linking. Yeah. These are the tags we have worked out till right now. We talk about paragraph, how to make that paragraph align properly. Okay, justify left, justify right, and how to align it centrally, and all these we have worked out. That are the basics of the HTML tags we have worked out. Okay, now today we are moving to the next tag. So these are the basics of HTML tag that we can work out, creating the paragraph, link, adding the images, then linking the one page to another page, creating the tables and all. Now what is the next thing we have to work out? Next thing is that in which we just have to go for the execution of some more tags that are called as form tag. Okay, if you want to take the input from the user, अगर आप लोगों को input लेना है user से, you can go for the this just a moment, let me check it in Visual Studio. आप डायरेक्टली एक नोटपैड प्लस प्लस का यूज करके भी इसे वर्कआउट कर सकते हैं. दैट इज एन वे वी कैन वर्कआउट. और अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन गो डायरेक्टली टू राइट डाउन द लाइन ऑफ कोड इनटू द नोटपैड एज वेल. ये भी कर सकते हैं. इसके अलावा देयर आर सर्टेन एडिटर्स आर अवेलेबल that are in HTML. We can go for the HTML type of editor given into the Visual Code, the latest one. इसका मैं आप लोगों को डेमो दूंगा. How we can proceed for this? Okay, how we can proceed for this? What is the way to be execute? We'll go on this as well. Okay, इसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे because most of the line of code need to be work out. We have to just go for the execution of this. Now we have to talk today about the form tag. See, this is a visual code. It is a kind of editor. Apart from that, there are the many more editors are also available. Okay. No, I have to don't save it. Now, what is the next? We have to talk about the form tag today. So, have you know about the form tag? Yes, guys. What is the use of form tag? Form tag का use क्या है? यूजर पासवर्ड और नेम के लिए. यूजर पासवर्ड और नेम के लिए. और We can create create input box, text box. yes. Okay, just a moment, guys. Just a moment.
Yeah, sorry for the interrupt, guys. So we have to go for the form tag. What is the use of form tag? Yes, guys. Anyone? What is the use of form tag? Creation of form. Creation of form. Why we have to create a form? To take the input from To take the input from users. user. Yes. What is the importance of the form? See, आज तक आपने जो भी कोई systems देखी होंगी, that most probably that systems are going to be work out to take the input from the user, process it and give the output. आप जब Facebook पे जाते हो, you have to perform the login. There are the two text boxes, first for your email or contact number. Second text box is for password. So there are the two text boxes are given. Okay, there are the two text boxes are given that both text boxes can be work out to execute this. Same way, whenever we want to take the input from the user, जब भी आप लोगों को यूजर से इनपुट लेना है तो आप कौन सी टैग्स का यूज करके लेंगे? तो आप यही टैग्स का यूज करके लेंगे, फॉर्म टैग्स का. देयर आर द n नंबर्स ऑफ टैग्स कम इनसाइड दिस. इसके अंदर अलग अलग तरीके की टैग्स आती है. नाउ व्हाट इज द थिंग गेटिंग टू बी वर्कआउट फॉर दिस एग्जीक्यूशन ऑफ दिस टैग? सो सबसे पहली टैग, आई वांट टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स which help us to take name, contact number, email ID, password as an input from the user. So what is this tag, guys? How to take input from the user? I want to create a text box. What is the tag to create a text box into HTML? Yes, guys. What is the tag to create a text box into HTML? Anyone knows कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग टेक्स्ट बॉक्स को? Yes, guys. Anyone knows? No. Okay, so let me tell you how to create a text box. Just simply write down input type is equals to text. Input type is equals to text. Input type is equals to text is nothing but the text box. Okay, input type is equals to text. Now if you want to check the output of this, अगर इसका आउटपुट आप लोगों को चेक करना है, so let's see. We have to just simply create a text box. Simply हम लोगों ने एक text box create किया है. See, here we can write down anything. Okay, what is a line of code to create a text box? We can simply write down input type is equals to text. Input type is equals to text. That is the way to create a text box. Have you clear, guys? Clear Yes. what you do? Okay. Yes. So here we are created the text box. Then एक हो गया text box. उसके बाद I want to create a radio button. How to create a radio button? लेकिन एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखोगे कि ये जो भी टैग्स आप यूज करोगे, टेक्स्ट बॉक्स है, रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है, ये सभी टैग्स आपको फॉर्म के अंदर वर्कआउट करनी है. हैव यू क्लियर, गाइस, व्हाट आई वांट टू से? ये सभी टैग्स आपको फॉर्म के अंदर वर्कआउट करनी है. अब क्वेश्चन ये है कि सर अगर हमने इसे फॉर्म के अंदर नहीं लिखा तो क्या होगा? तो इट वॉन्ट कॉज द एनी इश्यू, बट द गुड प्रैक्टिस सेज दैट कि फॉर्म वर्कआउट करना है ना तो आप फॉर्म के टैग्स वर्कआउट करनी है ना तो आप फॉर्म के अंदर ही वर्कआउट कीजिए. इज दैट क्लियर, गाइस? Yes, sir. Yes, sir. So that is the way to be proceed about the form/form. That is the way to be proceed about the form/form. Clear now? Yes, sir. Okay. So that is the execution of this. इस तरीके से हम लोग इसे एग्जीक्यूट करते हैं. So if you want to create, ठीक है, पहला हो गया हमारा टेक्स्ट बॉक्स. अब हमें क्रिएट करना है चेक बॉक्स. How to create a check box? Anyone knows? Yes, guys. How to create a checkbox? Same. इनपुट टाइप टेक्स्ट तो आएगा ही. Input type text आएगा ही. I just want to create a checkbox. How?
input type is equals to check. check box. Okay. ओके, अगर हम लोगों को चेक बॉक्स क्रिएट करना है तो वी हैव टू जस्ट सिंपली राइट डाउन input type is equals to check box. I do one thing, I remove the background color so that it will easily identify. Are you clear guys? Yes, sir. Yes. ध्यान में आ रहा है कि नहीं? अगर हम लोगों को चेक बॉक्स क्रिएट करना है सो वेयर वी हैव टू यूज द चेक बॉक्स. अगर आपको कुछ मल्टीपल सिटीज इनपुट लेनी है, ओके, यू वांट टू टेक द मल्टीपल सिटीज एज एन इनपुट, आपको यूजर से ऑप्शन लेना है, प्लीज सिलेक्ट द सिटी, देन यू कैन राइट डाउन द सिटी. Again, you can create one more checkbox. So take another checkbox. Okay, let's say Akola. Then again. So, what is an option given into the checkboxes? Checkbox में क्या option आपको available है? In checkbox, you can go for the execute multiple selection. Option. हाँ. Yes. Okay, are you clear, guys? Yes. You can go for the multiple selection. Clear? Yes, sir. Okay. तो सर मल्टीपल सिलेक्शन में मतलब एक साथ 4-5 सिलेक्ट कर सकते हैं. Yes, yes. आप Okay. एक साथ सभी बॉक्सेस को सिलेक्ट कर सकते हो. That is called as multiple selection. Okay. Okay. आप एक भी चेक बॉक्स वर्कआउट कर सकते हो, दो भी कर सकते हो, तीन भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप यूजर्स को मल्टीपल ऑप्शन प्रोवाइड करते हो. ओके, यूजर से आप पूछोगे कि हाँ कि आपको कौन सी सिटी चाहिए. यू कैन आस्क फॉर द हॉबीज एज वेल. अगर आपको हॉबीज के बारे में पूछना है, ओके, दे मे लाइक द क्रिकेट, मल्टीपल हो सकती है ना हॉबीज कैन बी सिंगल, Yes, sir. राइट. हॉबीज में बी द मल्टीपल्स, सो दैट यू कैन सिलेक्ट द मल्टीपल वन. Have you clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, you guys. So what is the line for that? Input type is equal to Input text. Checkbox. checkbox. हेलो Okay. सर. Input type is equal to, yes बेटा. हाँ सर, मुझे आवाज नहीं आ रही थी, आप रिपीट कर सकते हो क्या? Yes. See, अगर आपको checkbox create करना है, so what is the line you have to work out? Input type is equal to Checkbox. checkbox. Okay. So when we have to use the checkbox, जब आपको यूजर से मल्टीपल वैल्यूज इनपुट लेनी है, ओके, मल्टीपल सिलेक्शन, आपको यूजर्स को मल्टीपल ऑप्शंस देने हैं. ओके, मल्टीपल ऑप्शंस इन द सेंस यू वांट टू आस्क फॉर द हॉबीज टू द यूजर, ओके, या फिर आपको एग्जामिनेशन सेंटर देना है, तो एग्जामिनेशन सेंटर के लिए आपको कुछ ऑप्शंस देने हैं यूजर को, तो वो मल्टीपल सिटीज सिलेक्ट कर सकता है ना. Yes, sir. यस. Have you clear? Okay. That's the way to be proceed. Got it? Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरीके से हम एग्जीक्यूट करेंगे. So note it, execute at your end. Write down the line of code. How we can proceed? Input type is equals to text and input type is equals to checkbox. Execute. Yes, sir.
Done, sir. Done? Got output? Yes, sir. Yes, sir. So we have created two things. First is a text box and second is a Checkbox. checkbox. Okay. First is a text box and second is a checkbox. Then what is the next thing? Now we have to create a radio button. Huh? Yes, sir. Okay. So what is the use of this? First, we have created a text box. अगर आपको यूजर का नाम इनपुट लेना है तो आप यूज करेंगे टेक्स्ट बॉक्सेस को, और अगर आपको यूजर्स को कुछ मल्टीपल ऑप्शंस देके वर्कआउट करना है चेक बॉक्स को. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एट्रीब्यूट. When you are seeing the form, in the form there are the option for gender, right? तो जेंडर के लिए क्या दिया हुआ रहता है? Have you seen? Radio button. रेडियो बटन. और रेडियो बटन की प्रॉपर्टी क्या है? यू कैन सिलेक्ट ओनली Only one. वन. ओके. So how we can create a radio button? Just simply write down. Input type equals to Input radio. type is equals to radio. Input type is equals to radio. Radio. Okay, here I write down the mail, and again input type is equals to second text box I am going to create, that is female. Okay, so what is the output we are getting here? Male and Radio. but see, what is the problem over here? यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों रेडियो बटन सिलेक्ट हो रहे हैं. Yes, sir. Yes, sir. No, we don't want this both. We want only single. One. Single. ये है ना? एक ही रेडियो बटन सिलेक्ट होना चाहिए. It's selecting the both. So what is the way to be proceed? Same is equals to, दोनों को आप सेम नाम देंगे. N1. Okay. Again I will name it as an N1. Clear? तो अगर मैं दोनों को सेम नाम दूं तो likewise it is going to be executed. Okay. Are you clear? Yes, sir. Yes, sir. Clear, guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. That's the way to be proceed. What is the difference between checkbox and radio button? Checkbox में multiple selection होते हैं. Yes, sir. Okay. रेडियो बटन में सिंगल सिलेक्शन होता है. हाँ. Yes, sir. टेक्स्ट बॉक्सेस में मल्टीपल सिलेक्शन होते हैं, रेडियो बटन में सिंगल सिलेक्शन होता है. दैट द स्टोरी वी हैव टू वर्क आउट. Yes. हैव यू क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो दैट इज द वे टू बी प्रोसीड. यहाँ पे हम लोग इस तरीके से वर्कआउट करेंगे. Yes. क्लियर? Yes, sir. Okay. So input type is equals to radio, name is equals to N1 male, and input type is equals to radio, name is equals to N1 again female. Clear? Yes, sir. Okay. Now what is the next? अब ये हो गया आपका रेडियो बटन. Now अब बहुत सारे फॉर्म्स में आप लोगों ने और एक चीज देखी होगी, ड्रॉप डाउन लिस्ट. अब थोड़ा सा और एक बार, इफ यू वांट टू टेक द पासवर्ड एज एन इनपुट देन Input type password. Then text box is used. yes, अगर आप लोगों ने पासवर्ड की स्ट्रिंग देखी होंगी, तो whenever you are going to be type the password, you are getting a dot, right? Yes, sir. Yes. How to create it? वर्कआउट करेंगे हम लोग. Input type is equal to Password. password. Input type is equal to password. So see, clear?
correct? Yes, sir. No. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So that's the way you have to execute. Okay? आपको रेडियो बटन क्रिएट करना है और आपको पासवर्ड की फील्ड वर्कआउट करनी है. Execute this line of code. Check it at your end. सर कल वो टेबल क्वालिफिकेशन किया था मैंने, तो उसमें एरो मतलब टेबल में प्रॉब्लम आई है. एक Okay, एक what is the ब्लैंक issue? आया है और एक्स्ट्रा एक मिनट. Send me the line of code. यस सर. सर सो दिस, हाँ ये हो रहा है. इसका मैं Yes. Do इसका मैं share the screenshot. हाँ. एक मिनट. Okay. कुमल एक मिनट. And you not getting Yes, the screen. So what you are getting over there? Issue? बॉक्स मीन्स एक ब्लैंक आया और एक्स्ट्रा का ये बॉक्स शिफ्ट हो गया मीन्स. तुम्हारे इसमें actually there is an problem in Coding. td/td. ओके. Okay, कॉलम बराबर पास नहीं किया है. अच्छा ठीक है सर, चेक करती हूँ मैं. जस्ट चेक इट कि कहाँ पे हाँ /td मिसिंग हुआ है कहीं पे तो भी, या फिर /tr मिसिंग हुआ है. दो में से एक बात है. अच्छा ठीक है सर, चेक करती हूँ. ओके, गो फास्ट. Execute guys. Fast. एग्जीक्यूट हो गया सर. Okay, done. Have you created the radio button? Yes, sir. Okay. Yes, sir. How to create a text box? What is the line? इनपुट In टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स. Text box या text? text. Input type is equal to text. हाँ. To हाँ. create a checkbox, what is the line? इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स. Input type is equal to checkbox. To create a radio button, what is the line? Input type is equal to type. No. Input type is equal to radio. Name हाँ. or Name. common When रहेगा. you want to create a button, ठीक है, जब भी आपको रेडियो बटन क्रिएट करना है, तो रेडियो बटन में क्या होना चाहिए? दोनों के नाम सेम होने चाहिए. हाँ? नेम सेम होने Same चाहिए. होना क्योंकि अगर आप नाम सेम नहीं रहेंगे तो obviously it will create or provide an option to select a multiple one. Here guys. यस सर. Okay. That is the way to be proceed. That's the way to be proceed. Input type is equal to radio. ठीक है. और एक पासवर्ड की थी. Now to the next thing. अब मुझे क्रिएट करनी है ड्रॉप डाउन लिस्ट. ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपको सिटी इनपुट लेना है, मल्टीपल ऑप्शंस आप प्रोवाइड करें, तो आपको सिटी एज एन इनपुट लेना है. ओके, आपको सिटी एज एन इनपुट लेना है. तो मे देयर इज एन मल्टीपल ड्रॉप डाउन लिस्ट अवेलेबल, राइट ना? हो सकता है ना? ऐसा नो? हाँ. यस सर. क्लियर. सो व्हाट इज द वे टू बी एग्जीक्यूट? किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? नाउ लेट मी शो यू हाउ टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट. जस्ट राइट डाउन हियर सिलेक्ट /select. Important. To create a drop down list, we have to go select /select. Okay, we have to go
for select/select. Inside that we have to write down option option/option. ओके क्लियर? ओके, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे मैं लिखूंगा, लेट्स से अपोला. दूसरा ऑप्शन आगे उसी के अंदर ही मैंने लिखा है ऑप्शन/ऑप्शन. हियर आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन पुणे ऑप्शन/ऑप्शन. तीसरा बेंगलुरु ऑप्शन/ऑप्शन. चौथा मुंबई. क्लियर गाइस? यस सर. क्लियर ऑल ऑफ यू? इन व्हाट वे वी कैन एग्जीक्यूट? क्या करना है? यहाँ पे लिखना है select/select. ओके, select/select के अंदर हम लोग लिखेंगे option/option. ओके Clear? Now let's check for the output. How we are getting the output for this? See. Clear? यस सर. यस. Okay. So that's the way to be executed. इस तरीके से आपको एग्जीक्यूट करना है. Got it? यस सर. Okay. Yes. Now try to create a drop down list with this. Within that पहला ऑप्शन है select/select. select/select के अंदर option/option option/option option/option. आपको जितने भी ऑप्शंस क्रिएट करने हैं वो सभी ऑप्शंस आप लोग क्रिएट कर सकते हैं. ओके, दैट मे फॉर टेकिंग द एनीथिंग. आप सिटी के लिए यूज कर सकते हो. आपको कुछ अदर रूल्स वगैरह स्पेसिफाई करने हैं आपके सिस्टम में, उसके लिए यूज कर सकते हो. एनीथिंग दैट यू वांट यू कैन प्रोसीड. ओके, यस सर. execute now. Work out. Create a proper drop down list. Sir. Execute it properly. Done. Sure, done guys. Yes, sir. Yes, Work sir. out with the drop down list. Okay, देखिए. First of all, we create a text box, then check boxes. Okay, then radio buttons, drop down list, password field. Now what's the next? अब इसमें अब क्या बाकी है? What is the missing?
बटन, सबमिट बटन, सबमिट बटन. Yes. Submit button is missing. Okay. Submit button is missing. Yes. Now, how we can add the submit button? How we can work out with the button? So let me tell you how we can work out with the button. Simply to create a button, just write down input type is equals to submit. Okay, we are simply write down here input type is equals to submit. Now let's check. You are getting the submit button. Okay. अब by default यहाँ पे submit लिख के आया है. अगर आपको इसका text change करना है, you can change the text. Value is equals to sign up. Okay. Value is equals to sign up. So it will change the text also. Here guys, Yes, sir. Yes, sir. that's the way we can proceed. Okay. पहले हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया, फिर हम लोगों ने चेक बॉक्स क्रिएट किया है, फिर हम लोगों ने रेडियो बटन क्रिएट किया है. वर्कआउट. Yes, sir. Okay. Create and proper button. Number one. Yes, sir. Put the Text box. proper drop down list. Text box. Yes. Hit the button. Yes, sir. No. Execute fast. Done, sir. So done, guys. Yes, sir. Now what you have to do? अब आप लोग एक प्रॉपर दो चीजें करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप एन लॉगिन फॉर्म. हाउ? ये बनाएंगे आप लॉगिन फॉर्म. ओके. हियर आई वांट टू टेक्स्ट बॉक्सेस. फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स एंड देयर इज अ सेकंड टेक्स्ट बॉक्स. उसके बाद चाहिए एक बटन. ओके.
उसके नीचे लिख के आना चाहिए न्यू रजिस्ट्रेशन। Are you clear? Yes, sir. Okay. Then you have to go for the new registration. ठीक है? तो new दो टेक्स्ट registration बॉक्स लेना है करने के सर। बाद, yes guys? दो टेक्स्ट बॉक्स लेने हैं। हाँ, जैसे लॉगिन फॉर्म कोई भी कैसा रहता है, if you go for the हाँ, any हाँ। login form, email का रहो या कोई भी, Okay. two text boxes, first is for your name, second is for password. ओके। Yeah. Then उसके बाद आप लोगों को डेवलप करना है न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, हियर आई वांट अ न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जैसे यहाँ पे मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँ, ये फॉर्म ओपन होना चाहिए। यहाँ पे आप लेंगे नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, सिटी, ओके, देन जेंडर, ओके, Okay. एंड देन आस्क फॉर द हॉबीज एज वेल। ओके सर। Cleared all of you guys, and at the end we want the submit button. क्या करना है? Clear? यस सर। Okay. So that is the way you have to execute. Execute with this. You have to develop a proper login form. Huh? सर वो फॉर्म को सेंटर में लाने के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ, फॉर्म को सेंटर में लाने के लिए क्या करना पड़ता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू सर्च, ओके, एंड डिसाइड। ठीक है, फॉर्म को सेंटर में जस्ट सर्च एंड ट्राई टू एग्जीक्यूट। देयर इज एन ऑप्शन, लाइक एक तो आपका ये है, आप सेंटर वगैरह टैग यूज कर सकते हो, बट दिस थिंग कैन बी वर्कआउट इनटू दी सीएसएस। इसके बाद में हम वही चीज देखने वाले हैं। Okay, अच्छा ठीक है। by using the CSS and Bootstrap framework, we can align the form at the center and all things. Clear? ओके सर। Okay. So first of all, try to create with this one. Then we'll go on the more stuff again. Execute. Create a proper login form, create a proper registration form. फिर हमें उसे सबमिट करना है। We are going to be work out dynamically on that. Okay, we just go on dynamically on that. ओके सर।
Execute. Sir, like this. First form. Yes. Okay. Got it now? That's all. मेक अ प्रॉपर प्रॉपर जैसे रियल टाइम में जैसे होता है लिंक होता है प्रॉपरली वैसे होना चाहिए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे Okay, sir. वैसे वैसे आप लोगों को पता चलेगा हाउ वी कैन मेक इट प्रॉपर जैसे हम आगे जाएंगे वैसे ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट होते रहेगा Guys, एग्जीक्यूट to make a proper registration form and login form. प्रॉफिट 20% का हुआ है तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएंगी प्रॉफिट ऑफ द हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है तो 20% का प्रॉफिट हुआ है वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं अगर उसने सेल कितने किया सेल प्राइस कितनी बनेगा ना
Is it good, guys? I'm going to do one thing. Yes. If you have Yes. to work on this, okay? We'll meet back again on tomorrow at same time. With some more stuff. कल और आगे बढ़ेंगे, कल बात करेंगे HTML5 की. HTML5 में इसके अलावा और क्या है? ये तो अब तक जो भी हुआ, that is only of HTML4. Now text boxes को और कैसे वर्कआउट कर सकते हैं? Okay, how we can go for validations onto the text box? What are the way to be execute, validate और attractiveness कैसे बढ़ा सकते हैं और text boxes का? That's the story we want to go. Okay. Okay, sir. So we'll meet back again on tomorrow at same time. Till bye bye. Good day. Take care.